Good morning dear students. Today in this video we will discuss the third unit, that is learn from the mistakes. In this chapter, examples of famous personalities are given who have learned from their mistakes and ultimately attained success in their life. So let us start the reading. Thomas Alva Edison was an American inventor. American means people who live in America are called American. Same way, people who live in India are called Indian. Thomas Alva Edison was a name of person who live in America and was an inventor. It was he who invented electrical light bulb. Thomas Alva Edison was the person who invented the electrical light bulb which we all are using at our homes. During his experiments, when he was doing his experiment related to the invention of electrical light bulb, he tried 2000 different materials in search of a filament for the light bulb. When he was performing his experiment, he tried 2000 materials to make a suitable filament. Filament means cord or wire which we all see in the light bulb, but none worked properly. But out of these 2000 material, none of the wire work properly. After all these things, what happened? That is shown with the help of these pictures. All our work is in vain. We have gained nothing. Vain means useless or worthless. This person is saying all our work is useless because we have gained nothing. We have come a long way and learned a lot. But he is saying, this is the Thomas Alva Edison. He is saying that, but we have come a long way and we have also learned so many things. We know that there are 2000 elements which we cannot use to make a good light bulb. What he is saying? He is saying now we are knowing that there are 2000 elements which we can't use to make a light bulb. Okay, this person is an assistant. Assistant means the person who helps in a particular task, and this is Thomas Alva Edison. So here is discussion time and we have to answer some questions which are asked and related to this conversation. So let us start with the first one. How did Edison approach setback? Approach means way of dealing a problem. Setback means same thing, problem of difficult. How did Edison deal with problems? Answer is with positive mindset. Second question is, how did the assistant look at failures, and how is assistant looking on the failures? With negative approach. Third question is, how is failure related to success? How can we relate failure with the success? Failures can be turned into success by knowing actual reasons. Okay, if we know the reasons behind our failures, then we convert failures into success. In these way, failures and success are related to each other. Next is, can a person be always successful? No, this is wrong. What should be our approach to setbacks? We should never give up. Now in Hindi, the first example is the person whose name is, हमें सबसे पहले एग्जाम्पल दी हुई है थॉमस एल्वा एडिसन की. यो एक अमेरिकन इन्वेंटर था और उसने किसकी इन्वेंशन की थी, किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब की, जो बल्ब जो हम हमारे घर में यूज़ करते हैं. जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो वायर, जो हमें बल्ब के अंदर एक वायर दिखती है, उसे बनाने के लिए 2000 मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था. लेकिन वो 2000 मटेरियल में से कोई भी वायर अच्छी नहीं थी जो लाइट बल्ब बनाने में यूज़ हो सके. जब
थॉमस एल्वा एडिसन 2000 टाइम्स फेल हो गया तो उसके असिस्टेंट ने क्या बोला कि हमारा सारा काम तो यूजलेस है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, हमने तो एंड में हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी इस फेलियर को कैसे लिया, उसने कहा कि नहीं, हमने इस एक्सपेरिमेंट से अभी तक बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि अब हमें पता है कि हम इन 2000 मटेरियल के साथ 2000 एलिमेंट के साथ बल्ब नहीं बना सकते। और यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे कि एडिसन ने अपनी फेलियर को कैसे डील किया। आंसर इज विद पॉजिटिव माइंडसेट। सेकंड क्वेश्चन इज असिस्टेंट ने अपनी फेलियर को कैसे देखा या कैसे अप्रोच किया, विद नेगेटिव अप्रोच। थर्ड इज हम फेलियर और सक्सेस कैसे एक दूसरे से लिंक हैं। हम फेलियर और सक्सेस इसलिए लिंक हैं क्योंकि हम फेलियर को ही सक्सेस में चेंज कर सकते हैं अगर हम हमारी फेलियर के रीजंस को फाइंड आउट कर लें। कैन ए पर्सन बी ऑलवेज सक्सेसफुल, इट मीन्स क्या एक इंसान हर बार सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत बार मिस्टेक्स करता है और उन मिस्टेक से सीखता है, और जब कोई इंसान अपनी मिस्टेक से सीखेगा तब जाके वो सक्सेसफुल होगा। What should be our approach to setbacks? हमें setbacks को, फेलियर्स को कैसे लेना चाहिए? We should never give up. हमें कभी भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नेक्स्ट इज our approach to failures. हमें अपने फेलियर्स को कैसे डील करना चाहिए? The basic quality of a successful person is to understand one's mistakes and correct them. Okay. The successful person always have a quality, that is he should understand our mistakes and also correct them. Failure is not the end of everything. Okay, failure doesn't mean that everything is ended. On the contrary, it is an opportunity to make a new beginning. But failures are those which give us a new chance to start things again. Every failure should teach us something new. Okay, every time when we fail, each failure give us some new teaching. The greatness of a person lies not in never failing but rising up every time. Okay, the greatness of person is when he rise up again after every failure. Failure can be turned into success if one is able to understand the actual reason of failure and correct them. Same thing, we can change failure into success by knowing the actual reasons, and after correcting the reasons we can change our failures into success. Now in Hindi, जो सक्सेसफुल पर्सन है उसकी सबसे बेसिक क्वालिटी क्या होगी कि वो हर बार अपने मिस्टेक से सीखेगा कि उसने इस बार कौन सी मिस्टेक की है और उसे वो बाद में करेक्ट कर लेगा। ठीक है, और हमें कभी भी फेलियर को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया। हमें फेलियर्स को ऐसे लेना चाहिए कि वो हमारे लिए न्यू चांस है ताकि हम फिर से नई स्टार्टिंग कर सकें, फिर से हमारा काम स्टार्ट कर सकें। जब भी हम फेल होते हैं तो हर बार हमारी फेलियर हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। ठीक है, एक इंसान कितना महान है वो इस पे डिपेंड करता है कि वो हर बार अपनी फेलियर से क्या सीखता है और हर बार फेल होने के बाद फिर से खड़ा होता है और फिर से ट्राई करता है। हम अपनी फेलियर्स को सक्सेस में चेंज कर सकते हैं अगर हम अपने फेलियर्स के रीज़न को पता करें और अल्टीमेटली उन्हें करेक्ट कर लें। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। सो on the next page we fail to succeed. Here are the examples of some personalities who failed firstly, but after learning from their mistakes ultimately they succeed. The first example is Beethoven, German composer. Composer means a person who compose or write music for movies. He handled the violin awkwardly and preferred playing his own composition instead of improving his technique.
He always handled violin awkwardly. Awkwardly means weird, the way that is not normal. And he is preferred to play the violin or composition in his own way. Okay, and he is not interested in improving his technique to handle the violin. His teacher called him hopeless as a composer. And after watching his activities, the teacher called him hopeless, and he doesn't do good in the field of composing of music. So now in Hindi, Beethoven is a German composer. वो जर्मन का था और संगीत की रचना करता था, लेकिन वो वायलिन को बहुत ही अजीब से ढंग से पकड़ता था और हमेशा अपने ही कंपोजिशन को अपने ही तरीके से वायलिन प्ले करता था. उसे अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. जब उसके टीचर ने उसे ये सब करते हुए देखा तो उसने एक एज ए होपलेस कंपोजर बोला. मीन्स जो कुछ भी अच्छा कंपोज नहीं कर सकता, जिसे कुछ भी कंपोज करने की उम्मीद ना हो. द सेकेंड एग्जाम्पल इज वॉल्ट डिज्नी, cartoonist and animator. He was fired by a newspaper editor for lack of ideas. Fired means dismissed or terminated from his job. Okay, Walt Disney firstly do job in a newspaper, but his editor means the person who is in charge of newspaper dismissed him from his job because he doesn't have the ideas. Disney also went bankrupt several times before he built Disneyland. Bankrupt means the person who is unable to pay debt. So Disney also went bankrupt so many times, and after all these failures he ultimately built this Disneyland. The third example is of Charles Darwin, father of the theory of evolution. Charles Darwin is a famous personality in the field of biology. He wrote in his autobiography. Autobiography means the book in which the person wrote about himself, about his life. I was considered by my father a very ordinary boy, rather below the common standard in intellect. In his autobiography, he wrote that his father considered him an ordinary boy who has very average intellect, means understanding or intelligence. Next is Albert Einstein, a German scientist. He did not speak until he was 4 years old and did not read until he was 7. Albert Einstein was not able to speak until the age of 4 years and unable to read until the age of 7. His teacher described him as mentally slow child lost in his foolish dreams. Okay, his teacher called him or described him as a mentally slow child, means a below average child who is always lost within his foolish dreams. Michael Jordan, the greatest basketball player. He writes, I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. I have failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. He writes that he has missed 9,000 shots in his career and also lost 300 games, and he failed over and over and over again and again until he succeed. Next example is with Winston Churchill, Nobel Prize winner. He struggled in school and failed the 6th grade. It means he is very average student in the student and failed in his 6th standard. After school, he faced many years of political failures. Political means the person who stand in elections. Okay, when he start his career as politicians, he also failed there before becoming the prime minister at the age of 62.
But after all these failures, he ultimately became the Prime Minister of United Kingdom at the age of 62 in the year of 1940. He was also an army officer and writer. These are the example of the famous personalities who learned from their mistakes and ultimately succeed in their life. Now I will explain these in Hindi. सेकेंड वन इज़ वॉल्ट डिज्नी हु इज़ ए कार्टूनिस्ट एंड एनिमेटर. उसे एक उसके न्यूज़पेपर के एडिटर ने उसके जॉब से हटा दिया था क्योंकि उसके पास न्यूज़पेपर के लिए आइडियाज़ नहीं थे. इसके बाद जो डिज्नी था, वॉल्ट डिज्नी था, कई बार बैंक करप्ट भी हुआ. बैंक करप्ट मीन्स जो आदमी बैंक का लोन वापस नहीं कर पाता उसे बैंक करप्ट बोलते हैं. और अल्टीमेटली सबके बाद उसने डिज्नीलैंड को बनाया. दिस इज अ चार्ल्स डार्विन हु इज़ द फादर ऑफ थियोरी ऑफ द एवोल्यूशन, जिसने एवोल्यूशन की थ्योरी दी. इसके ओनर में उसे फादर बोलते हैं एवोल्यूशन का. ओके, फादर ऑफ थियोरी ऑफ एवोल्यूशन. उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, मतलब कि अपनी स्वयं जीवनी में लिखा कि उसके पापा उसको एक साधारण सा लड़का समझते थे जो बहुत ही, जिसकी जो इंटेलिजेंस थी एवरेज थी, जो किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं, कॉमनली तरीके से अंडरस्टैंड करता था. कोई भी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट इज एल्बर्ट आइंस्टीन. एल्बर्ट आइंस्टीन था जो वो 4 साल की एज तक उसने बोलना नहीं सीखा था और 7 साल की एज तक वो पढ़ नहीं पाता था. उसके टीचर ने उसको एक एवरेज बच्चा बोला था जो हमेशा अपने ड्रीम्स में खोया रहता था. लेकिन लेटर ऑन एल्बर्ट Einstein proved so many theories, okay, which are helpful in the study of physics. मिचेल जॉर्डन, द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, उसने क्या लिखा था? उसने अपनी लाइफ में 9000 शॉट्स जो हैं वो मिस किए थे और उसने 300 गेम्स वो हारा था. लेकिन वो फेल हुआ था, बार बार फेल हुआ था, लेकिन वो हमेशा ट्राई करता रहा और अल्टीमेटली उसने अपनी लाइफ में सक्सेस को अटेन कर लिया, प्राप्त कर लिया. नेक्स्ट इज विंस्टन चर्चिल. विंस्टन चर्चिल थे जो स्कूल में एक एवरेज बच्चे थे जो अपने 6th स्टैंडर्ड में फेल हो गए थे. उन्होंने जब स्कूल के बाद पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया तो वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ में भी काफ़ी बार फेल हुए. उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में भी बहुत सारे फेलियर्स को फेस किया, लेकिन वो अल्टीमेटली 62 ईयर्स की एज में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बन गए. ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर यूनिट 3rd. टेक केयर. थैंक यू.